Hello, good morning to all of you. Today we are industrial pharmacy under the guidance of Dev government. Our group members are Sonone Dhanashree, roll number 58, Survase Amruta, roll number 59, Shinde Pallavi, roll number 57, and I am Geeta Bheware, roll number 62. Our topic name is pellets and formulation requirement of pellets. So we will first see the definition of pellets. Pellets are the spherical or nearly spherical free-flowing granules with a narrow size distribution varying between 500 to 1500 micrometer for pharmaceutical application. They are generally produced via a pelletization process, whereby a powder blend consisting of an API excipients particles is agglomerated into a spherical granules. म्हणजे काय तर pellets हे कसं असतात तर pellets are spherical or nearly spherical म्हणजे ते spherical nearly spherical shape मध्ये असतात free flowing granules. they narrow त्यांची size ही narrow size distribution असते आणि त्यांची 500 to 1500 micrometer असतात. They are generally produced via pelletization process. ते मेनली pellets हे pelletization process मधून फॉर्म होतात consisting of API excipients म्हणजे ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स यूज करून pellets फॉर्म्युलेशन केलं जातं. pelletization ही प्रोसेस काय आहे pelletization is a agglomeration process that free-flowing spherical or semi-spherical units referred as to a pellet. म्हणजे काय pelletization is a agglomeration process आहे. agglomeration process म्हणजे granules जे असतात त्यांचे कलेक्शन केलं जातं that converts fine powders or granules of bulk drugs and excipients into a small free flowing spherical or semi spherical units referred as pellets. म्हणजे एक्सिपियंट्स म्हणजे जे असतात ते यूज टॅबलेट अँड कॅप्सूल फॉर्मिंग साठी यूज केले जातात ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे बाइंड करण्यासाठी त्याच्यापासून फ्री फ्लोईंग और स्पेरिकल और सेमी स्पेरिकल शेपचे ग्रॅन्युल्स फॉर्म केले जातात त्यालाच आपण पॅलेट असे म्हणतो. नेक्स्ट Good morning, all of you. Good morning, all of you. I am Dhanashree Prakash Sonone, roll number 58. Today, I explain the advantages and disadvantages of pellets. In first advantages, uniformity of the dosage, the layering technique and exhaustion in a spironization offered a great accuracy with drug delivery pellets. Then spears have excellent flow properties. This is become very useful in an atomized process of the process where exact dosing is required to tableting, molding operation, capsule filling and packaging. Third, prevention of a dust formation. This is a result to an improvement of the process safety. A fine powder can cause dust explosion and thus with respiration of the fine can cause health problem. Fourth, reduce inter patient viability. Fifth, a modified release multicular delivery system are less susceptible to dose dumping that single unit dosage form. Next slide.
Okay, disadvantages of pellets. Pellets filling involve capsule filling can increase the cost as compared to tablet pellets filling ला जास्त cost लागतो. Second, tableting of the pellets destroy film casting on the pellets. Third, the size of the pellets may vary formulation to formulation, but as usually in the range to 0.05 mm to 2 mm. Fourth, pelletization demands highly uh, sophisticated and specialized equipment, thereby increase the cost of manufacturing. Fifth, the control of manufacturing process is compliant with too many process viable as well as formulation viable. The next point explain Amrita Survasi. Good morning, all of you. Myself, Pallavi Shinde. Today, I am explaining the point desirable properties of pellets. First, for uncoated pellets, uniform spherical size, narrow particle size distribution, good flow property, low friability, even surface, low dust formation, reproducible packing, ease of coating. Second, for coated pellets, maintain all above properties, desirable drug release characteristics. Next slide घे ना. Formation requirement of pellets. First, pellet core. Properties of the pellets such as composition, porosity, size, and density have been reported to affect the functioning of the multiple unit containing tablets. And understanding of the compression behavior of uncoated pellets can provide basis for formulation multiple until tablets. The desirable mechanical properties of the core, that they should be strong, should not be brittle, and have a low elastic resilience. Next slide. Porosity of the pellet. Porosity means Sachidrata. Porosity of the pellets is another key factor that affect the compaction pattern and thereby affects the polymer coat integrity during compression. There is a relationship between pellet porosity and the compaction behavior. Instead of a drying rate effect on porosity and tableting behavior, it was found that an increased drying rate gave more porous pellets due to decreased pellets. Um, densification during the drying process, which were more deformable and which formed a tablet of a higher tensile strength. Next point will be continue. Roll number 59, Survasi Amruta. Good morning, all of you. Myself, Amruta Survasi, roll number 59. Today I am explain the size of pellets, shape of the pellets, and polymer coating. First is size of the pellets. The size of the pellets also affect the compactions properties and the drug realized from the compacted pellets. At the same coating level, smaller pellets were more fragile than larger pellets. Second point, this was attributed to the reduced film thickness of the smaller pellets because the larger surface area. Small pellets have been found to be less affected than larger pellets by the compactions process. The smaller heats were significantly stronger relative to their size than the larger ones. Next slide. Next slide, madam. Shape of the pellets. Shape of the pellets was found to have bearing in the compressions, behavior, and tablet forming ability of granule materials formed of microcrystalline cellulose. Second, a change in granule shape towards a more irregular shape induced a more complex compression behavior of the granules. Example, primarily attritions or of the granules was induced.
and a more irregular shape increased the bed of wide which allowed in increased degree of deformations that granules underwent during compressions. Next slide. Last one, polymer coating. Polymer coating means the nature of the polymers, type and amount of polymers coating have significant impact on the compressions induced changes in a film coating structure. Thank you, ma'am. Okay. Hello, ma'am. हा इट्स ओव्हर देन नेक्स्ट आता तुमचे रोल नंबर सांगा आता सेमिनार दिलेले 59 62 57, 58, 59 and 62. 57 58 59 and 62 okay हा then next मॅम 34 ला होस्ट करा. 34 व्यवहारे मॅडम तुम्हीच होस्ट आहात Yes, ma'am. 34 ला होस्ट करा मॅडम Okay, ma'am. हा Good morning all. We are going to conduct a seminar. The subject of seminar is industrial pharmacy first and topic of our seminar is production in process and quality control test of soft gelatin capsules. The team member of our presentation was Pallavi Kadam, Gayatri Kalshetti, Tanvi Khandalwal and Runali Kohli. After content of our seminar: introduction of soft gelatin capsule, advantages and disadvantages of soft gelatin capsule, manufacturing of soft gelatin capsule, quality control test. First in process test and final product testing, then conclusion and reference. Introduction of soft gelatin capsules. Soft gelatin capsules is a solid capsule, outer shell and surrounding a liquid or semi-solid center that is a inner film. म्हणजे सॉफ्ट जिलॅटिन हा आउटर साइडनी सॉलिड असतं आणि त्याच्यामध्ये लिक्विड किंवा सेमी सॉलिड फिल केलेलं असते. दे आर वन पीस hermetically sealed and are made of gelatin which is a glycerinopropyl hydroalcoholic that is a sorbitol are added. Soft gel cells are a combination of gelatin, water, opacifier and plasticizer such as glycerin and sorbitol. म्हणजे सॉफ्ट जेल असतात ते कॉम्बिनेशन असतं जेलॅटिनचं, वॉटरचं, ऑपॅसिफायर, प्लास्टिसायझर, ग्लिसरीन आणि सॉर्बिटल यांचं. Then advantages of soft gelatin capsules. Soft gelatin capsules are in a sealed from so they are protect the inner film from oxidation and degradation. म्हणजे सॉफ्ट जिलॅटिन मध्ये कॅप आणि बॉडी असं नसतं तर ते एक टोटल सील केलेलं असतं. सेकंड, opaque soft gelatin capsules also protect the inner film from UV radiation and photosensitive products. म्हणजे सॉफ्ट जिलॅटिन आहे त्या इनर फिल आहे त्याला UV radiation पासून किंवा फोटोसेन्सिटिव्ह प्रोडक्टला प्रोटेक्ट करतात. इट इन्हान्स पेशंट कॉम्प्लायन्स ड्यू टू द इलिगंट ॲपरन्स. सॉफ्ट जिलॅटिन असतात त्या ॲपरन्समध्ये इलिगंट असतात त्यामुळं पेशंटचा इन्हान्स जास्त असतो. सुटेबल फॉर मेडिकमेंट लाईक सेमी सॉलिड ऑइल्स लिक्विड आणि फॉर्म्स. म्हणजे सॉफ्ट जेल्स आहेत त्या सेमी सॉलिड ऑइल किंवा लिक्विड मेडिकमेंटसाठी सुटेबल असतात. सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल्स इन्हान्स द बायोबिलिटी ऑफ
active ingredient of pharmacy. Disadvantages of soft gelatin capsules. Few filling equipments are available. Manufacturing expensive म्हणजे ते सॉफ्ट जिलेटिनचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे ते एक्सपेन्सिव्ह असतं. Drugs from oily vehicles may pass into the cell. Soft gelatin capsules having difficulties in dealing with water soluble materials. Soft gelatin capsules are highly sensitive to moisture. Soft gelatin capsules having difficulties in dealing with effervescence or effervescent materials. Soft gelatin capsules having difficulties in dealing with delicescent material. Next part, I was hand over to Gayatri Kalshetty. Good morning, all of you. I am Gayatri Kalshetty, and today I am going to explain manufacturing of soft gelatin capsule. There are 4 types of process through which we can manufacture a soft gelatin capsule. First is plate process. Second is a rotary dye process. Third is reciprocating dye process, and fourth one is Aclogel capsule filling machine. So first process is the plate process. Place the gelatin sheet over a dye plate containing numerous dye pockets. Application of vacuum to draw the sheet into dye pockets. मीन्स की ह्या फर्स्ट प्रोसेस मध्ये जी काही जिलॅटिन शीट असते ती प्लेटवर ठेवायची आणि त्या प्लेटवर खूप असे डाय पॉकेट्स असतात. त्यांचा व्हॅक्यूमचा वापर करून जिलॅटिन शीट त्या डाय पॉकेट्स मध्ये फिक्स करायची. Fill the pockets with the liquid or paste. Place another gelatin sheet over the filled pockets and sandwich under a die press where the capsule are formed and cut out. Means आपण जेव्हा डाय पॉकेट्स मध्ये जिलॅटिन कॅप्सूल फिक्स करतो त्याच्यामध्ये लिक्विड किंवा पेस्ट जे काही असेल ते फिल करायचं. मग यावर दुसरी जिलॅटिन शीट ठेवायची आणि प्रेस करायचं. अशा प्रकारे कॅप्सूल तयार होतात, त्याला कट करून घ्यायची. सो इन दिस डायग्राम वी विल सी how the dye pockets are present on the plates and the material fill between the layers of gelatin sheet. Next slide. The next process is the rotary dye process. In this machine, the soft gelatin capsule are prepared and then filled immediately with liquid medicaments. It is having 2 hoppers and 2 rotating dies. या प्रोसेस थ्रू सॉफ्ट जिलेटिन कॅप्सूल प्रिपेअर केले जातं आणि यामध्ये लिक्विड मेडिकामेंट फिल केले जातं. या मशीन मध्ये 2 होपर्स आणि 2 रोटेटिंग डाईज असतात. द लिक्विड मटेरियल इज प्लेस्ड इन 1 होपर अँड द लिक्विड मेडिकामेंट इन अनदर होपर. एका होपर मध्ये लिक्विड मिक्सचर असतं आणि दुसऱ्या होपर मध्ये लिक्विड मेडिकामेंट असतं. द 2 rotating dies rotate in opposite direction. When the fluid gelatin mixture enters the machine from the hopper, it produces continuous ribbon. जेव्हा होपर मधून फ्लुइड जिलॅटिन मिक्सचर मशीन मध्ये एंटर होतं तेव्हा मशीनचे जे दोन्ही रोटेटिंग डाईज असतात त्या अपोजिट साइडला रोटेट व्हायला लागतात. यामुळे 2 कंटिन्युअस रिबन प्रोड्यूस होतात. दिस हाफ शेल्स ऑफ द कॅप्सूल इज फॉर्म्ड. अशा प्रकारे कॅप्सूलचा हाफ शेल तयार होतं. ऍट दिस स्टेज द मेजर क्वांटिटी ऑफ द मेडिकामेंट इज फिल्ड इनटू it with the stroke of a pump. With the subsequent movement of the dies, the other half capsule is formed. या स्टेज मध्ये मेजर क्वांटिटीचे जे काही मेडिकामेंट्स असतात ते पंपचा वापर करून फिल केले जातं आणि त्या डाईसच्या मुवमेंटमुळे कॅप्सूलची दुसरी हाफ शेल पण तयार होते. The 2 half shells of the capsule are sealed together by the heat and pressure of the rotating dies. अशा प्रकारे कॅप्सूलचे दोन्ही हाल्स असतात ते सील केले जातं विथ द हेल्प ऑफ प्रेशर अँड हीट. ऍज द डाय रोल्स रोटेट द कन्वर्स ऑफ द मशीन डाय पॉकेट्स सील्स अँड कट्स द फिल्ड कॅप्सूल. अशा प्रकारे कॅप्सूलचे दोन्ही हाल सील करायचे आणि कट आउट करून घ्यायचे. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी कंटिन्यू बाय तन्वी खंडेलवाल. Next point is reciprocating dye process. This machine produces capsule completely automatically by leading 2 films of gelatin between a set of vertical dies. मतलब इसमें ये मशीन में जो कैप्सूल है वो completely ऑटोमेटिकल है और उसमें 2 फिल्म्स होते हैं जिलेटिन के जो एक वर्टिकल डाई के बीच में प्लेस किए जाते हैं. रॉ सॉफ्ट एरोज ऑफ पॉकेट्स are formed across the gelatin film filled with medicaments. जो pockets होते हैं
वो जिलेटिन फिल्म के बीच में प्लेस किए जाते हैं और उसके थ्रू जो है मेडिकामेंट जो है वो फील किया जाता है. And as they process through, the dyes are sealed, shaped, and cut off the film as the capsule, which drop into a cool solvent bath. फिर ये जो मेडिकामेंट प्लेस करने के बाद वो जो डाइज है उसको सील किया जाता है थ्रू डाइज और उसको शेप दिया जाता है कैप्सूल के शेप में फिल्म फॉर्म करके और उसके बाद वो कट आउट करके एक कूल सॉल्वेंट बाथ में उसको ड्रॉप किया जाता है. नेक्स्ट Aglogel capsule filling machine. This is another rotary process involving a measuring roll, a die roll, and a sealing roll. ये एक और एक रोटरी प्रोसेस मशीन है जिसमें एक मेजरिंग रोल, डाई रोल और एक सीलिंग रोल प्रेजेंट होता है. द मेजरिंग रोल रोटेट्स डायरेक्टली ओवर द डाई रोल एंड द पॉकेट्स इन द टू रोल्स आर अलाइंड विथ ईच अदर. इसमें जो रोल है वो मेजरिंग रोल है वो डायरेक्टली डाई रोल के साथ रोटेट करता है और जो दो पॉकेट्स है वो एक साथ अलाइन किए जाते हैं. The powder or granular film material is held in the pockets of measuring roll under vacuum. The जो पाउडर या ग्रैन्युल फिल्म मटेरियल करना होता है वो पॉकेट में डाला जाता है और ये प्रोसेस जो है वो वैक्यूम के अंडर की जाती है. A plasticized gelatin sheet is drawn into the die pocket of the die roll under vacuum. जो जिलेटिन शीट का प्लास्टिसाइजेशन है वो डाई पॉकेट में होता है ऑफ द डाई रोल के जो डाई पॉकेट है उसमें होता है और ये प्रोसेस भी अंडर वैक्यूम की जाती है. As the measuring roll and die roll rotates, the measured dose are transferred to gelatin lined pockets of the die roll. और जैसे ही जो मेजरिंग होता है रोल का और डाई रोल का वो रोटेट करने लगता है तो जो मेजर्ड डोज है जितना डोज अपने को उस कैप्सूल के अंदर फिल करना है वो जिलेटिन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सॉलिड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. उसमें फर्स्ट है इन प्रोसेस टेस्टिंग. ड्यूरिंग द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट आर, मतलब जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके बीच में जो टेस्ट किए जाते हैं वो तो उसमें फर्स्ट है द जेल रिबन थिकनेस. उसमें जेल रिबन का थिकनेस मेजर किया जाता है. सॉफ्ट जेल थिकनेस एट द टाइम ऑफ एनकैप्सुलेशन, जो सॉफ्ट जेल अपन फॉर्म करते हैं कैप्सुलेशन के टाइम उसका थिकनेस. फिल मैट्रिक्स वेट एंड कैप्सूल शील वेट, मतलब जो अपन मैट्रिक्स फील करते हैं उसका वेट और कैप्सूल जो अपन फॉर्म की है वो शेल का वेट. नेक्स्ट इज सॉफ्ट जेल शील moisture level and soft gel hardness at the end of the drying stage. Or for the determination of the field weight, each capsule is weighed and the contents removed by cutting open the capsule. इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कैप्सूल का वेट डिटरमाइन करते हैं. तो उसके लिए जो अंदर कैप्सूल को ओपन करते हैं बाय कटिंग प्रोसेस और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो रिमूव करते हैं. द शेल इज देन washed with petroleum ether and empty shell is reweighed. और एक बार अपन कैप्सूल वेट करेंगे उसके बाद अपने को सिर्फ कैप्सूल के शेल का वेट करना है तो उसको कट करके ओपन करने के बाद जो शेल है वो अपन वॉश करके पेट्रोलियम ईथर से वॉश करेंगे और जो एम्प्टी शेल है उसको फिर से वेट करेंगे. इफ नेसेसरी एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू ऑब्टेन द प्रॉपर फिल वेट, और अगर जरूरत पड़ी तो अपन प्रॉपर फिल वेट के लिए उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय रोनाली. Good afternoon, everyone. Myself, Runali Rashikar Kori, and I'm continuing the next part of our seminar, that is finished product testing. Commonly, finished capsule evaluation testing involves permeability and sealing test, potency, impurity content, weight variation test, uniformity and content, and disintegration test, etc. But the special quality control test of soft gelatin capsules are first is seal thickness. Controlling the right thickness of gelatin ribbon is very IMP in encapsulation process, as it influences the shape of the soft gel, and it is measured under a microscope, and it should 1/2 to 2/3 of the ribbon thickness. The second is total or shell moisture test. The equilibrium moisture content of soft gel capsule is about 13 to 16%,
and the moisture content is determined by the toluene distillation method. The distillate is collected over a period of 1 hour. The third is capsule fragility or rupture test. In this test, the force required to rupture the capsule is determined. Next is determination of freezing and high temperature effect. In this testing, the capsule is kept at the temperature greater than 45 degrees Celsius for 30 days. And the changes in freezing point and effect of high temperature on the capsule is observed. Next is conclusion of our seminar is current drug delivery process मध्ये more than 40% drugs ना poor biopharmaceutical properties असतात. म्हणजे जसं की poor aqueous solubility or permeability through the cell membrane. The development of softgel capsules dosage form have advantage on this oral drug delivery system. Softgel capsules mask the poorly water soluble compounds and it enhances the biopharmaceutical properties. So this form of dosage form are mostly preferred nowadays. We referred the content of our seminar from the textbook of industrial pharmacy and the Google search. Thank you. Hello, ma'am. Okay, next. Hello, ma'am.